Good evening, everyone. I hope you guys are doing great. Welcome to the Gold Mini Expiry, and we will have. Guys, please write yes in the chat if I'm audible to you. I hope, guys, I'm audible to you guys. Yes, thank you so much, guys, for confirming. So, guys, welcome everyone for the Gold Mini Expiry. We will have Harsh sir with us today for the Gold Mini Expiry. Okay. So I hope आप लोगों ने कल भी you have joined the commodity natural gas expiry yesterday that we had. It was a great session indeed, and Ashish sir had shared a lot of insights, lot of his insights around the market yesterday. And we also hope we have Harsh sir with us today, and it will be the great session today, a great profitable session. Alongside, he will share all the insights and strategies along and all the inventories around it, right? And talking about gold, we know how the gold prices are shooting up day by day. Exactly, Akansha. If you are a part of it, definitely great, great. You made a handsome profit yesterday of 12K, right? And we are hoping for the same for the today as well. So अगर gold की भी बात किया जाए, it is uh, sort of in a range, अगर मैं देखा जाए सुबह, it is in a range of around 20 to 30 points, right? So एक 20-30 रुपए के रेंज में ये मूव हो रहा है, राइट? और अभी यहाँ पे एक स्टैंड जो दिख रहा है नीचे 2600 के आसपास में एक अच्छा खासा सपोर्ट है इंट्राडे चार्ट पे, राइट? तो लेट्स सी. Sorry guys, actually a bit issue with my throat, so that is the only reason I have to turn off my camera and audio. So yes, we have Harsh sir with us right now. I've already added him to the stage, so let's welcome Harsh sir, and let's hope we will have a good session like yesterday we had with Ashish sir. Harsh, please let me know if I'm audible to you. Yes, Avinash, you're audible. Great, great, Harsh. Let me know when we are good to go. Then I'll hand over the session to you. Yes, I think in a couple of minutes we can start. Sure, sure. So, yes, guys, we'll wait like more couple of minutes. Hoping uh, Herschel will fix his the entire frame and everything like in couple of minutes. Then we'll start the session. And guys, don't forget to join us tomorrow in the Nifty. Sorry, day after tomorrow in the Nifty expiry, and we will have Chandan sir with us today on the Thursday, right? So yes, don't forget the session. We will have Chandan sir after a very long time, right? And yeah, Harsha, we are good to go. Yes, we can start now. Yes, over to you then. All right. Okay. Thank you, Avinash. Good evening, everyone. Welcome to the Gold Mini Live Expiry session. So yes, it has been a power pack week. We started with crude oil expiry, and then pre-NG natural gas expiry, and today we are meeting for gold mini expiry session. As we know that आज जो है गोल्ड मिनी का जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है ऑप्शन का वो आज एक्सपायर होने वाला है एंड आई एम हैप्पी दैट यू गाइस मेड good profits yesterday. Hopefully we make best use of this session even today and ensure that we get some good profitable trades. So yes,
So as we know that in the last eventful week, there has been multiple data. So because we are meeting for gold mini expiry session, I'll first start with precious metals only. Last week we saw that uh, there were multiple data on Thursday, GDP data, jobless claims data, which had pretty negative impact on precious metals, especially gold and silver. We saw it falling sharply because jobless claims data were reported lower than expected, तो उसका जो pressure है वो prices में थोड़ा impact negative आया है. And then even GDP was reported higher, which gave it was sort of a double whammy. And then हमने देखा कि किस तरीके से एक continuous sliding off था gold and silver में. So Nifty was falling, equity markets were falling. On the other side, gold and silver were also falling. So it was slightly a negative week, which was the last one. But yes, now we have seen that. So to starting with, I'll just share my screen first. I hope my screen is visible now. Yes, Harsh, your screen is visible. Yes. So to continue with moving forward with precious metals in gold and silver, especially gold, we have seen that after the sharp fall, एक बार के लिए जो fall है वो बिल्कुल रुक चुका है. And I think in past couple of trading sessions, the movement has been in a tight band, in a broad range. So आज भी अगर हम देखें दिन की जो शुरुआत हुई है, आई थिंक रफली अराउंड 75-600 और लेवल पे स्टार्ट हुआ था. एंड अभी वी आर एट 75-500. तो अगर पूरे दिन में भी अगर हम देखें तो अब तक जो ओवरऑल एवरेज टू रेंज था आज के दिन का, आई थिंक इट वाज रफली अराउंड कपल ऑफ 100 पॉइंट्स ओनली. सो because there was a slightly a dull start for the day, we can see that because आज कोई डेटा भी नहीं है, आज second half में there is no interesting data as such also to give any push to the prices and price action. तो movement wise I think expected रहेगा looking at the current setup की थोड़ा sideways ही है. एक directional price action, एक price move जो है वो missing है, and it is trading in a tight band and little non-directional. But anyways, talking about the technical outlook for gold mini, we can see that how after a sharp rise initially, there has been a sharp fall which is followed by intense selling pressure. तो हमने देखा कि किस तरीके से एक शार्प फॉल आने के बाद अभी भी गोल्ड का जो वीकनेस है वो कंटिन्यू है. हम देख सकते हैं कि किस तरीके से लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के बाद प्राइस जो है अपसाइड के तरफ एकदम कैप्ड हो चुका है. वी कैन सी कि कंटिन्यूसली एक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करते हुए दिखा है. हमने ये भी देखा कि 19 दिसंबर को एक स्ट्रॉन्ग बेरिश गैप फॉर्म हुआ जहां पे कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकडाउन भी हुआ है. मूविंग एवरेज में भी थोड़ा जो सेटअप है वो वीक था एंड प्राइस वाइज भी नेगेटिव खुला. उसके बाद एक फॉलोअप सेलिंग देखने मिला एंड पोस्ट दैट इट डिड ट्राई टू टेस्ट द रेजिस्टेंस. एंड एक बार के लिए हमने देखा कि किस तरीके से कल भी गोल्ड मिनी प्राइसेस ने ट्राई किया कि 76,000 का लेवल ब्रीच करके कुछ अपसाइड में मूवमेंट मिले. बट एज वी कैन सी दैट द अंडरलाइंग ट्रेंड इज बेरिश. एक कंप्लीट डाउनसाइड है, लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर है, मूविंग एवरेज भी डाउनसाइड ही दिखा रहा है, स्लोप नीचे की तरफ है. तो सेलिंग ऑन राइज सेटअप जो है वो इंटैक्ट है. इस वजह से 76,000 का लेवल जो है वो आज के लिए भी काफी क्रूशियल रहेगा. अगर आगे चल के 76,000 लेवल के नीचे कंटिन्यूस बेसिस पे ट्रेड करता है गोल्ड मिनी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइसेस
might test 75,000 odd level on the lower side. तो साइडवेज जो बायस है अभी के लिए गोइंग फॉरवर्ड फॉर द डे इज गोइंग टू बी साइडवेज टू लोअर. तो एक नेगेटिव बायस ही है आज के लिए. बट बिकॉज इट इज इन अ टाइट बैंड, तो थोड़ा साइडवेज रह सकता है मे बी. जैसे कि अभी 75,500 चल रहा है, तो पॉसिबल है कि यहाँ से एक बार 100-150 रुपीज एक बार अपसाइड की तरफ मूवमेंट आए एंड देन अगेन डाउनसाइड की तरफ 75,300 350 टेस्ट करना है. सो ओवरऑल ये ही एक नैरो रेंज लग रहा है फॉर द डे. बट यस, लुकिंग एट द करंट सेटअप एज सच, अपसाइड में इतना एक्साइटिंग, इतना इंटरेस्टिंग कुछ नजर नहीं आ रहा है. तो आई बिलीव हम जो है, हमारा व्यू जो है वो एटलीस्ट फॉर नाउ वुड बी फॉर द डाउन साइड. तो हम वेट करेंगे बिकॉज हम देख सकते हैं कि एज सच कोई इंटरेस्टिंग मूव नहीं है. सो आई वुड नॉट फोर्स or push any trade right now. Definitely if we get any movement in the later half of the session or mid of the session, we'll definitely act on it and we'll push the trade. But अभी currently एक setup देख के थोड़ा जो है वेट करने जैसा लग रहा है. But yes, strike to focus would be 75,500 put. तो इसमें हम definitely मॉनिटर कर सकते हैं, उसमें हम ध्यान रख सकते हैं. बट एज ऑफ नाउ कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं कर रहा हूँ. लेट्स सी कि किस तरफ मार्केट कन्विंसिंगली मूव हो रहा है एंड कैसे मूवमेंट आ रही है. तो ये था गोल्ड के बारे में. आर्ली चार्ट, अभी हम एक दूसरा टाइम फ्रेम पकड़ के चले. फॉर एग्जांपल लेट्स से डेली चार्ट. तो डेली चार्ट में भी वी कैन सी कि गोल्ड का जो नेचर है वो थोड़ा रेजिलिएंट है. बट अभी हम देख सकते हैं कि आई थिंक नॉट इवन अ मंथ एंड हमने ऑलरेडी दो मैसिव स्विंग गोल्ड में देख चुके हैं. हम देख सकते हैं कि 26 नवंबर को एटलीस्ट, मतलब हार्डली अ मंथ बैक, गोल्ड ने एक हायर लो स्ट्रक्चर फॉर्म किया था एंड 75,000 के लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद within couple of weeks 78,000 level test किया, which is little strange and interesting because generally gold की जो movement है वो काफी resilient है. but yes, over the period of past 1 month हमने दो massive swing देखे. एक तो from low to high and now back again from high to low. so now अगर हम पोजिशनल व्यू की बात करें, लुकिंग एट द डेली चार्ट, थोड़ा एक मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई जो है दैट इज आल्सो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. तो अपसाइड के लिए जो मोमेंटम में स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो भी मिसिंग है. सो डेफिनेटली आरएसआई इज आल्सो कंफर्मिंग द फॉल. तो पोजिशनली आगे चल के 75,000 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा. एनी ब्रेक बिलो 75,000 इन गोल्ड वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट इट टू टेस्ट further somewhere around 73,500 odd levels on the lower side. but उसके लिए 75,000 के नीचे सस्टेनेबली ट्रेड करना होगा गोल्ड को. अदरवाइज ये एक टाइट बैंड में ही ट्रेड करेगा, जो कि नीचे में 75,000 और ऊपर में 76,000. so any breach of the same, we can expect the decisive move going forward. so this was about the gold. Avinash, meanwhile we can take questions if we have any. अगर कोई भी question है. So as of now, we don't have any questions. So guys, please start posting your questions if you have any around any of the index into commodity market या आपको specifically gold में अगर पूछना है, please shoot your questions out here. So our expert will address your query and answer accordingly, right? So as of now, Harsh, there is no such questions, right? And so you can please continue, sharing the inventory data or talk about any of the other strikes, right? Or we can discuss more around crude. Sure. So this was about the gold. So because we are discussing gold, I think precious metals में another important one is silver. So we'll take silver first. So yes, guys, as such we can see that
So this is the hourly chart of silver. We can see that in the hourly chart, after there was a trend line breakdown on the lower side, after breaking this upward sloping lower trend line, हमने देखा कि किस तरीके से जो फॉल है वो नीचे की तरफ और पेस के साथ बढ़ गया, प्रीसीडेड बाय बेरिश गैप, एंड उसके बाद फिर से एक हमने बेरिश गैप ओपनिंग देखा. सो बैक टू बैक ओवरऑल सेंटिमेंट जो है वो डाउनसाइड की तरफ ही है. सो सेम फॉर सिल्वर एज वेल. हमने देखा कि आफ्टर टचिंग 96,000 ऑलमोस्ट द फॉल कंटिन्यू टिल अबाउट 86,000. तो इसमें फॉल भी जो है काफी अच्छा था. बोथ इन गोल्ड एंड सिल्वर फॉल वाज प्रीटी शार्प, बट यस डेफिनेटली सिल्वर में जो रिलेटिव वीकनेस जो थी वो ज्यादा थी, तो उसमें जो पेस था फॉल का वो काफी ज्यादा था, टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज बोथ. सो एक मेन रीजन था कि सिल्वर का तो हालांकि नेचर ही वैसा है कि इट इज वेरी क्विक ऑन विच एवर साइड इट मूव्स, तो काफी वॉलेटाइल है, काफी मैसिव है. बट इसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से एक फॉल रुकने के बाद एटलीस्ट इन सिंस पास्ट 2 days मूवमेंट एकदम साइडवेज हो चुकी है. सो इन सिल्वर एज वेल अभी थोड़ा शांत है, थोड़ा डल है, बट डेफिनेटली इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ से 90,000 का रहेगा सिल्वर में, एंड सपोर्ट 88,000 का. ये जो व्यू है वो सिर्फ आज का ही है. सो इंट्राडे व्यू में शेयर कर रहा हूँ आपसे आर्ली चार्ट में, तो ये एक बैंड में ट्रेड करते हुए देखने मिल सकता है. एंड बायस जो है वो सिल्वर में थोड़ा साइडवेज एक ब्रॉड रेंज में है. आई एम वेटिंग फॉर फर्दर क्लैरिटी. सो एज सच ट्रेड देने जैसा सेटअप अभी भी सिल्वर में नहीं आया. So as Avinash was talking about crude oil, so definitely this is one counter which is continuously trading in the range bound movement. प्राइस का जो मूवमेंट है वो काफी रेंज बाउंड है और साइडवेज है. वी सॉ दैट ऑन द 4 hourly चार्ट स्पेशली क्रूड ऑयल ने एक ट्रायंगुलर ब्रेक बिल्कुल दिया, बट अपसाइड में जो मोमेंटम होना चाहिए, जो पेस होना चाहिए, जो फॉलोअप बाइंग होना चाहिए, वो अभी भी स्लाइटली मिसिंग है, बिकॉज द ओवरऑल अंडरलाइंग ट्रेंड इज ओनली साइडवेज. सो द मार्केट इज अनेबल टू डिसाइड विच साइड टू एक्चुअली मूव. तो इसमें आगे चल के स्ट्रैटेजी एक जो करने लायक लग रही है वो सपोर्ट बेस्ड बाइंग है. तो सपोर्ट बेस्ड इंट्राडे बाइंग है वो इसमें इंटैक्ट है, as long as prices are holding above 5,830 5,850 zone. We can expect it to test 6,050 on the higher side. तो ऊपर में 6,050 का जो लेवल है वो क्रूशियल रहेगा आगे चल के. अगर वो लेवल ब्रेक करके अपसाइड में फर्दर मोमेंटम आता है, then we can see prices making sort of higher highs, higher lows. एक थोड़ा ट्रेंड है वो नियर टर्म में टर्न होके थोड़ा अपसाइड की तरफ देखने मिलेगा, एंड 6150 का लेवल मे बी परहैप्स आ सके, बट फॉर नाउ टू अर्ली टू से, बिकॉज 60 का जो क्रूशियल लेवल है वो इंपॉर्टेंट रहेगा अभी देखने लायक. सो दैट कुड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बट डेफिनेटली लुकिंग एट द करंट सेटअप एक चीज तो श्योर है कि जो भी सेलिंग आ रही है उसके बाद फॉलोअप थोड़ा रिकवरी देखने मिल रहा है. एज सच ट्रेंड इतना वीक भी नहीं है, बिकॉज 4 hourly चार्ट में काफी टाइम से एक बेस फॉर्मेशन की तैयारी तो बिल्कुल है. सो यस साइडवेज है, थोड़ा एक हायर रेंज में ट्रेड करते हुए देखने मिल सकता है क्रूड में, तो थोड़ा बाइंग ऑन डिप्स का अप्रोच रहेगा क्रूड में. So yes, friends, how can we forget natural gas, especially in the energy space, और वो भी विंटर में. सो हमने देखा है कि नेचुरल गैस का जो कल का एक्सपायरी रहा वो भी काफी चॉपी रहा. फर्स्ट हाफ में जो प्राइसेस थे ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहे थे, एंड देन इट वाज on the later half of the session the prices were under pressure and slipped
by wide margin, and हमने देखा कि किस तरीके से 330 435 का लेवल टेस्ट करने के बाद it did come to retest the breakout zone. तो अल्टीमेटली 304-5 का जो लेवल है वो आगे चल के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है. It has already retested the breakout. So before discussing pattern and the structure, I would quickly request you all कि looking at the current setup, क्या कोई बता सकता है कि ये कौन सा पैटर्न है, एंड चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमने आई थिंक फ्रेंड्स ये पैटर्न के बारे में पिछले या कुछ सेशन पहले डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है. तो ये पैटर्न हमारे लिए काफी नोन है, एंड फॉर द न्यू कमर्स आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट देम टू ट्राई. अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो प्लीज चैट बॉक्स में पोस्ट करिए. People are posting cup and handle, fractal, cup and handle. So yes. So yes, Avinash. So cup and handle is perfectly the right answer. ये एक्चुअली प्रॉपर कप एंड हैंडल फॉर्म हो चुका है ऑलरेडी, एंड उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से प्राइसेस ने एक अच्छा स्विफ्ट मूव दिया अपसाइड की तरफ, एंड हम देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे बुलिश गैप्स भी है. तो ये बुलिश गैप काफी इम्पोर्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंस ज्यादा है, बिकॉज ब्रेकआउट में स्पेशली ये जो नोन ब्रेकआउट है, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट जो कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह एक्ट करता है. सो हमने देखा कि एक गैप के साथ प्राइसेस ओपन हुआ है, तो इसका जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो 2 टाइम्स हो जाता है अगर कोई भी पैटर्न ब्रेकआउट में ओपन करने के बाद अपसाइड की तरफ निकलता है. तो बट डेफिनेटली इमीडिएटली वो गैप फिल हो चुका है, बट यस वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट किया, एंड फॉलो अप बाइंग वाज वेरी मच एविडेंट. फिर से रीटेस्ट करना है ये ब्रेकआउट लेवल, एंड प्राइसेस अगेन वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देते हुए ऊपर की तरफ निकले. तो अगर हम ये पैटर्न के ब्रेकआउट के टारगेट की बात करें तो करीब करीब ये पैटर्न ब्रेकआउट का टारगेट समवेयर अराउंड 355-360 के आसपास आ रहा है, एंड करंटली एनजी इज कोटिंग एट 320. तो पॉसिबल है कि आगे चल के 30 to 40 रुपीज का जो मूव है, इट इज स्टिल ड्यू. द इम्पेंडिंग मूव कैन स्विच ऑन द हायर साइड. तो ओवरऑल सेटअप नेचुरल गैस में काफी तेजी का है, एंड डेफिनेटली इट इज आउट परफॉर्मिंग अक्रॉस ऑल द कमोडिटीज. वी हैव सीन गोल्ड एंड सिल्वर गेटिंग वीक, crude oil staying in the tight range, broader range, but natural gas has been an outperformer return wise, profit wise, price wise. So yes, definitely NG को फोकस में रखना चाहिए even for current month and next month going forward, because काफी सारी चीजें ये हमने डिस्कस की कि प्राइस वाइज क्यों, बट अगर हम मैक्रो अपडेट की बात करें तो रशिया के साइड से सप्लाई डिसरप्शन का एक मेजर इम्पैक्ट आ सकता है नेचुरल गैस में, बिकॉज यूक्रेन हैज गिवन अ थ्रेट टू रशिया दैट दे माइट ब्लॉक द पाइपलाइंस फॉर द गैस सप्लाई. तो अगर वैसे होता है तो डेफिनेटली आगे चल के पॉजिटिविटी जो नेचुरल गैस के लिए वो फर्दर ज्यादा होगी. एंड इसके अलावा टेम्परेचर आउटलुक जो है वो भी काफी पॉजिटिव रहा है नेचुरल गैस के लिए. तो बिकॉज वी हैव सीन कि इन दिस विंटर सीजन थोड़ा प्राइसेस के लिए इम्पैक्ट पॉजिटिव रहा है, बिकॉज वी हैव सीन कि हीटिंग डिमांड बढ़ा है बिकॉज ऑफ द कोल्डर वेदर कंडीशंस एंड लोअर टेम्परेचर आउटलुक. सो ये काफी सारे रीजन है जो सपोर्टिव है नेचुरल गैस के लिए. आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि हमारे जो भी कमोडिटी इनसाइट्स है, एक्सपायरी बाइट्स है एंड डेली बाइट्स है, वो गो थ्रू करो. वी अपडेट ऑल द मैक्रो changes and whatever the significant developments are, कौन सी इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं, तो ये सारा चीज आप अपडेटेड रहेंगे. सो ये भी काफी सारे मल्टीपल रीजंस है नेचुरल गैस के लिए. सो बोथ फंडामेंटल एंड टेक्निकल, जब ये दोनों भी एक सिंक में आता है तो उसका जो सपोर्ट है
अपसाइड की तरफ या डाउनसाइड की तरफ, जो भी जिस भी तरफ है, वो डबल कंफर्मेशन के साथ मूवमेंट देखने मिलता है. तो अभी के लिए तो पॉजिटिविटी डेफिनेटली कंटिन्यू रह सकती है नेचुरल गैस में. बट यस, वी ऑल्सो सॉ दैट समवन आंसरिंग फ्रैक्टल. सो यस, मतलब फ्रैक्टल तो सारे पैटर्न होते हैं, because that is the nature of the pattern. Patterns, they are fractal in nature. You can spot multiple, similar type of patterns in multiple time frames. So definitely that is one of the key nature of the pattern of the classic formation. So that was good attempt, but the exact answer is cup and handle. तो ये हमने देखा नेचुरल गैस के बारे में. वी मूविंग अगेन टू गोल्ड मिनी. So yes, friends, I think we are good to monitor our trade. We'll initiate a trade, and our strike to focus was 75,500. We can see that prices are now finally on the early chart moving downwards, और थोड़ा नीचे की तरफ ट्रेड करते हुए दिखा है. So definitely immediate basis पे 300 level to test कर सकता है, and any break below that expecting further fall towards 75,000. So I would suggest you guys to buy 75,500 put gold mini at current market price of 174. इसमें हमारा स्टॉप रहेगा 70 का and target रहेगा 330. So guys, buy gold mini 75,500 put at 174 with the stop of rupees 70 and target of 330. Great. So guys, we have initiated a trade on gold mini. जैसे कि हर्ष सर ने हमें already बता दिया on 75,000 put, right? And we have to buy it at the current market price of around 174. The stop loss will be 70 and the target for the upside will be 330, right? Yes, and yes, Avinash. So the strike is 75,500. Great. So guys, we have pinned it as well in the chat box. Please make sure you initiate the trade, as we can see a downside momentum from here, right, sir? So we are hoping कि यहाँ से हमें एक थोड़ा सा डिक्लाइन दिख सकता है, और ये ट्रेड में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बनने का चांसेस ज्यादा दिख रहा है, राइट? बट वी हैव टू स्टिल होल्ड द पोजीशन till the market closing, right? And जो भी update रहेगा, Harsh sir will be definitely share it to you before we end the session. So yes, Harsh sir, over to you. Yes, Avinash. So just moving forward, we have initiated this trade and currently it is quoting at 170. So अगर किसी ने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है, ये करंट मार्केट प्राइस पे भी हम बाइंग कर सकते हैं. सो हमारा बाइंग रेंज रहेगा 165 to 175 के बीच में. Currently it is trading at 170, so one can enter at current market price also. And अगर हम 1:1 का भी कोई मूव देखते हैं अपसाइड की तरफ, तो रफली अराउंड 270 के लेवल पे हम पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं. एंड वहां पे इन केस इफ समवन वांट्स टू बुक फुल प्रॉफिट्स दे कैन, एंड इफ समवन वांट्स टू होल्ड तो हमारे 330 के टारगेट से होल्ड भी कर सकते हैं. तो हमारा इसमें फर्स्ट टारगेट रहेगा 270 एंड सेकंड टारगेट 330, which has I think Avinash has already discussed. तो ये चीज था फॉर गोल्ड मिनी, एंड आई थिंक वी हैव ऑलमोस्ट covered the maximum of the instruments today. If there are any further questions, happy to take. So guys, I would repeat the trade once again, right? We have revised the target a little. So we have initiated a trade on gold mini 75,500 put. The buying range will be around from 165 to 175, right? So with a stop loss of 70, our first target will be 270 and the second target will be 330. If you want to book your profits, you can fully or partially book your profits near 270. And if you want to hold, you can hold it till 330. But make sure if you are initiating the trade and if it's trading near 250, 270, please make sure you trail your stop loss to the buying range so that from there you will not make any losses, right?
So please follow these little steps to avoid making losses. So I guess we have initiated the trade. Please hold your positions. And yes, Harsh sir, would you like to add anything more, or would you sum up the session before we end the session, since we are near ending of the session? Yeah. So please add a little more, or please sum up the session if you want to move. Yeah. Yes, definitely, Avinash. So yes, friends, definitely currently the trade is active, and this was for the buyers. But because it is slightly in the broader range, I would also like to initiate one more trade, which is going to be for writers. So for writers on the upside, 76,000 call option, which is currently quoting at 12 rupees, and 75,000 put, which is currently quoting at 21. So I think 21 and 12, roughly around 33, 34 point. If someone is willing to, sell both this call, तो ये जो strategy हमारी वो है short strangle, sell 76,000 call and sell 75,000 put, because it has been in the sideways range in a tight band throughout the day and also a previous trading session. तो going forward थोड़ा जो साइडवेज मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा, तो ये जो शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी है वो इनिशिएट कर सकते हैं, बट इट्स एन ऑप्शनल ट्रेड. इट इज ओनली फॉर राइटर्स, जो लोग राइटिंग करते, कॉल या पुट सेल करते, तो ये दो स्ट्राइक ध्यान में रख के बेच सकते हैं विद करंट कंबाइंड प्रीमियम ऑफ 34. एंड इसमें जो है हमारा स्टॉप रहेगा 71 का, एंड टारगेट इज गोइंग टू बी 1. So this was for writers. It's an optional trade. So एक alternative trade भी हमने आज दिया है. अगर किसी को ये करना है तो कर सकते हैं. But definitely would suggest कि हमारा जो इसके पहला वाला trade था वो बिल्कुल ले सकते हैं. तो 75,500 का जो put है इसमें monitor करो. This is our strike to focus for for now and for the intraday purpose. और ये टाइम वाइज अगर किसी को होल्ड करना है ये ट्रेड, सो आई वुड सजेस्ट कि अभी कैसा हो रहा है, पिछले कुछ एक्सपायरी सेशन से ऑब्जर्व किया है चीज की कभी कभी लेटर ऑफ द सेशन में आफ्टर 10 11 के आसपास भी मूवमेंट आता है, एंड वी नो कि मार्केट जो है इज अप फॉर अप टिल 11:50-55, तो 11 के आसपास ही मूवमेंट आता है. तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार वहां तक वेट कर सकते हैं फॉर दिस ट्रेड. बट इफ देयर इज एनी अर्ली एग्जिट, आई विल डेफिनेटली अपडेट अविनाश अबाउट द सेम. एंड अगर हमारा कोई भी टारगेट जो है वो पहले आता है तो विच एवर इज अर्लियर हम वो पकड़ के चलेंगे. Great. So I guess Harsh, we have already added a lot of things on the trade we have initiated. Gold mini कब तक होल्ड करना है? सूरज जी, I guess हमारा मार्केट जब तक ओपन है around 10:30 is the maximum you can hold, I guess, right Harsh sir? क्या मार्केट तो 11 बजे तक होता है? Yes. We can hold this trade till about 11, because generally हम 10 एडवाइस करते हैं, बट आजकल कैसे हो रहा है, पिछले कुछ एक्सपायरी सेशंस में 11 बजे तक भी मूवमेंट काफी आ रही है, एंड एकदम एंड में भी काफी कॉल पुट के जो प्राइसेस है वो एक्टिव हो रहे हैं और अपसाइड डाउनसाइड में बोथ द साइड मूवमेंट देखने मिल रही है. तो इसीलिए मेन रीजन है कि थोड़ा अगर किसी को एक्सटेंड करना तो 11 बजे तक एक्सटेंड कर सकता है ये ट्रेड. Great. So I guess I hope this answer your query, सूरज जी. So यहाँ से अच्छा खासा हमें एक डाउनसाइड लग रहा है आएगा, राइट? एंड प्लीज मेक श्योर यू पुट अ स्टिक स्टॉप लॉस of 70 or whatever we have suggested, and the first target will be 270. So please hold this trade till 11, and uske baad if you can short your position, don't carry forward your trade, right? So yes, that's it guys from our end, and just that, thank you so much Harsh for giving such a great trade, I would say. And let's hope it will be profitable for everyone who have initiated the trade.
So thank you guys for joining. Thank you so much, Harsh. And guys, we'll definitely update you on Stockholm, whatever the feedback will be, right? So yes, thank you so much, Harsh. Okay, friends. So we'll wrap up the session. All right. Thank you for joining.